सो द स्ट्रीम के लिए सिंपली यू कैन जस्ट पुट फ्लैग ओवर हियर। जैसे अभी हमने इनपुट एज अ दिया मॉडल को एज अ पेलोड, उसी तरह से हमारे पास स्ट्रीम भी जा सकता है एज पेलोड। सो यू कैन सी देयर कि मेरे पास एक स्ट्रीम का ऑप्शन है जो मैं फॉल्स या ट्रू कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ट्रू करूँगा तो द रिस्पॉन्स विल कम एज अ स्ट्रीम, एंड एज सुन एज आई डिड दैट यू कैन सी हियर कि टाइपस्क्रिप्ट ने यहाँ पे एक वार्निंग जैसा दे दिया है कि आउटपुट ऑफ टेक्स्ट इज़ नॉट देयर। सो अभी यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आएंगी। तो फॉर दैट वी विल गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो हमारे पास इवेंट आ रहा है लाइक रिस्पॉन्स का, उसको हमें अवेट करना पड़ेगा बिकॉज इट विल कम इन अ चंक्स। जो हमारे पास स्ट्रीम के रिस्पॉन्स है वो बेसिकली मल्टीपल स्टेट में आएंगे। तो पहला स्टेट हमारे पास है कि क्रिएटेड द लाइक इवेंट एंड देन इन प्रोग्रेस इवेंट, उसके बाद या फेल्ड हुआ है, कंप्लीट हुआ है, आउटपुट आया है कि नहीं आया। सो देयर आर मल्टीपल स्टेज और उस स्टेज के बेस पे हमारे पास रिस्पॉन्स आते हैं। एंड नाउ लेट्स कॉपी दिस कोड एंड पुट इट ओवर हियर। लेट मी रन दिस एंड यू विल सी दैट देयर विल बी multiple object coming from the model. So you can see here there is multiple responses coming out. So the first one will be the created one. You can see it is a in progress, like the type is created, and the second one should be like in progress, the type is keep changing, and all the stage of the response will be coming to you. तो अभी simply जो हमारे पास last useful response will be that it will be the delta one. If you see that output text delta, so this is the type which we are going to use. So if event dot type is equal to this one, so if this is going to be something, then we can log the event. So yeah, so if the type of the event is going to be this, we are going to log the event. So with this what we are going to see that कि हमारे पास जो response आएंगे वो अब सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एज अ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में आएंगे. सो लुक एट हियर. So we'll have all the object which is the type of the output text delta, and then we can get the delta from here. You can see here there is another delta like key where we have the exact value which we need. So we can just put here event dot delta and we will get the text as a stream which we need. So look at this. So we got all the response as a text which is coming from the response dot output text delta, and the thing which we are using is event dot delta, which is the content of that event. Cool. So we can just try to do this. Let final text as something empty, and then we can keep adding that. So we can just say final text plus equal to the event dot delta. Cool. So we will have console.log the final text. So this will be the entire text by concatenating those. So let's run that again and we will have for streaming, and at the last we will have like जो पूरा sentence है हमारे पास वो आ जाएगा. तो I think I have added inside the loop. इसको मैं बाहर भी रख सकता हूँ, and then I will get that only once. So you can see here कि पहले हमारे पास स्ट्रीम का जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है, एंड देन वी हैव अ फुल फ्लैज सेंटेंस लाइक वंस अपॉन अ टाइम अ जेंटल यूनिकॉर्न नेम लाइक लूमा, समथिंग लाइक दैट द रिस्पॉन्स जो हमारे पास मॉडल से आई है. कूल. सो वी हैव लर्न हाउ टू यूज स्ट्रीमिंग. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू. कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग. बाय बाय.